Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muazzam Manzoor, and now we are going to start off our discussion with a very important and conceptual subsection of biology, that is the immunity. Let's have a look at the big picture of this subsection. In this subsection, first of all, we'll talk about introduction to the immunity. Secondly, हम innate immunity versus acquired immunity को in detail discuss करेंगे. Thirdly, we'll talk about the innate immunity in detail. Fourthly, we'll go into the nitty-gritty of acquired immunity. And last of all, we will discuss the 3 lines of defense of our body. Let's start off with the introduction to the immunity. What is immunity basically? Immunity is the ability of an organism to defend itself against disease. ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की सलाहियत होती है अपने आप को बीमारी से बचाने की. इस कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ में आप देखें, हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं जो कि इस ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इस ऑर्गेनिज्म के अराउंड ये एक डिफेंस वॉल प्रेजेंट है जिसकी प्रेजेंस की वजह से ये डिजीज कॉजिंग जो एजेंट्स हैं ये इस ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज नहीं कर पा रहे. तो ये जो डिफेंस वॉल है इसको हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं. इस कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ में